First of all, let's keep this session very interactive. It doesn't matter how many members we have. It should not feel like a college lecture. It should be very conversational, normal. हम बात करते हैं. The same way we talk with our friends. It should be like that only. So if we start, we hear this term a lot in the industry, a lot in the news, which is business automation. So like maybe some of you can speak, like what do you think is business automation exactly? Like before working on something, I think maybe we should know exactly what we are trying to do. What exactly is business automation and why is it needed? Any one of you would like to speak? Yeah, Kirtika. Hi Harsh, hi everyone. Good morning. What I think about business automation is ki basically whatever task we have or whatever operations, marketing, technology, or maybe team management or any kind of thing, even when we are sending proposals or sending things to the clients, and when we are receiving the feedback from them or the further things, so everything comes under everything is like a business process, and then automating them using AI basically means that uh, kind of adding the speed to deliver the results faster, also doing it Yeah, at a faster rate, and something which runs on autopilot जहाँ पे human interface की जरूरत ना हो इतनी. So that is what I think of business automation. exactly. Anyone else? Like three, two, one. Okay, then we go. So business automation, if we talk about, see, what is business automation? Business is an entity. It is working for profits, all right, like any other entity. So to maximize the profits, you obviously have to lower down the cost of it, right? When we see the biggest asset of like service-based companies or product-based companies, we see a human salary component is there. So that is the human labor which is included into the same, which comes with a cost. So if my workforce or my input, which is going to the business, like all of these things like repetitive tasks, all of the repetitive tasks that the my executive is doing, like for example, if a particular person is there writing down the bills, calculating the GST on how much is to be charged to the customer, and if we see other things like customer support board, so like customer support executive, so we see that what they're doing is the task they're doing is very repetitive. So if somehow we can replace the repetitive rule following task which have a set of rules that okay you have to do this, if we can somehow replace those tasks by some kind of automation, this is what we call business automation. Okay, why do we need it? So if we see what is a site saying, using software to do the repetitive and rule following tasks so that people spend time on work that actually needs a human. Like you see AI is there, so even as a developer or something, you can actually spend time on the things which actually needs your input, like build a HTML page which takes this. So taking all of these three four inputs is where actual human expertise is needed, actual domain expertise is needed. But building a HTML CSS website is a repetitive thing. It uses the same HTML tags, it uses the same HTML form and the same things. So this is a repetitive thing. For example, a customer care executive is there, or it's a Zomato only. A particular customer said that okay, my order is running late. Where is it? Now, what does the customer care executive do? It basically checks how long is the order running late, where is the delivery care executive, and tells them that okay, your order will arrive in 10 minutes or 12 minutes. We're sorry for the delay, kind of thing. Now, this is a repetitive task. If we can replace that entity with the automation, then we are able to save money for the business and hence grow profits. All right. So uh, these are some set of business automation tasks which can be used. Some examples are invoices and billing. Same kind of thing is there. A customer comes to us, tells us that okay, this is what they have purchased. We calculate the GST. We charge the same amount using any payment method and create a bill out of it. Customer queries, FAQs, and most relevant, like they're asking similar questions only on the same. Data entry, if you see, like order, copy, maintenance of sheets, and everything. Again, a repetitive task. Reports and follow ups.
So weekly summaries, reminders, sending status updates, or maybe checking your inbox every day and then finding out that, okay, these are the things which have to be sent to any communication channel. So rule of thumb, if you're doing it same more than twice a week, it's a candidate for automation. Again, we should use it in our daily life as well as for the businesses who are looking to cut down their cost every day passing. They're also looking for these things that, okay, I have to remove the repetitive task from my calendar so that we can automate them. Let's see a traditional automation, what we had before AI. So automation is not something which came in like last 2 years, but even traditional automation was there, which does not use AI. Suppose a new order arrives. Like this is also a preset condition, right? That okay, if there's this, we have to do this. So whenever a new order arrives, there is a form, email, and a payment. Then if we are checking if amount is greater than 5,000, so like simple check hai, we don't need AI or something. And then we simply create an invoice and send the email. Like easy, right? This is the automation. But earlier a person used to do this. And now it was automated using a system, which is simple, but if else loops and conditions and whatever we've learned in the early days of Python, right? For the no-code persons, it's like a simple logic, like checks and everything. Like just for the information, how many people are here non-tech and are how many are tech? Just write it down in the comments so that we can get an idea of what kind of examples we should use. Non-tech, tech, non-tech. Okay. All right. So let us use examples of that only. So like you understand this thing, right? That new order arrives, amount is greater than this, and create invoice and send. So these are simple steps which have a clear defined path, and you don't need intelligence to understand that what exactly needs to be done in the next step, right? What was the profit of it? Like they were fast and reliable, like they are cheap to run, they don't need any accessory LLM or anything. It's just a simple automation. But the biggest problem of it was that it only handles what it was told. It means if the amount is greater than 7,500 and if it satisfies this condition, so I will have to go back and update the entire same thing. Or maybe when the new GST regime is there to calculate the new GST, I'll have to go and update this entire automation system. So this system is not adaptable to the situations. What if this was a cancelled order? What if this was an order of minimum amount? Like everything. In this kind of automation, you will have to manually update the complete automation because this cannot adapt to the situation, right? What if midway this order is cancelled or something? So there are a lot of scenarios like that. So due to this thing, the automation was always limited to some kind of task. Like before 4 years or 3 years back, we see automations were limited to only certain tasks which followed a specific path. Now, what came is like the limits of the rule. Example, invoice creation. The rule expects a clean structured form, but real customers don't send clean structured forms. Also, yes, for this traditional automation, you need a very structured kind of input for this pipeline. Like a customer is there, item is this, and then the rate is this. What if the item does not belong to the rate card or something? So, but customer sends unstructured data. So for this automation, we need very structured data and very structured output, right? So these are some limitations of this traditional automation. Then what came? Then came in the market AI-powered automation. When we add a language model to the workflow. So language model is something which is LLM. It basically takes your text and outputs a text. But in the output text, it can also provide a structured output like JSON and others. It can also understand the structured inputs like JSON, CSV, or anything else. So when we see it, when we add a language model to the workflow, it is now able to handle the messy parts of rule for every case. What it is able to do now is it is now able to understand the situation.
Like it can read the WhatsApp message, understand the customer. I can see that it is one of my sellers, and then it is trying to place an order or something. Then it is able to decide. It can go on, check my inventory and decide that, okay, should I even take this order or not? Then it can generate, it can write things. So it can draft the invoice, politely reply to the vendor on the WhatsApp as well, and for approval and other things. So whenever AI is there, it can decide that, okay, this order is risky. Maybe I should go to Hirsch and ask whether I should take it order or not. So it will simply send me a WhatsApp message that, okay, this is the order details, and should we take it or not? So human in the loop is also there. So when AI came into the market, it was basically able to understand, handle, and decide for itself. That is why we see that all the customer care chatbots like Flipkart is there, Amazon is there, Zomato is there, every customer care thing, which can be replaced by a language model by just understanding and deciding. So AI automation has replaced that entirely. Okay. So same messy message, same unstructured message, which we were not able to work with, we can work with it now. Okay. So we see correct invoice delivered on WhatsApp. So this is now possible, integration and other things. All right. Now are we clear till this point? If you have any doubts, please feel free to ask. Somebody is here. Okay. All right. So what are the advantages of AI automation? If we see, so some advantages of AI automation is that it is now scalable. We can now handle 10 or 10,000 requests a day, and we don't need to hire extra workforce for the same. We can see that AI automation is also cost effective. Like if one workflow even takes like 1 rupees to run, it is much lesser than the salary we need to pay for the same, right? It works 24/7. So for 8-hour shift, you have to have 3 employees for the same. And now you can just build a AI automation like customer support bot or something, which can work 24/7 and at a scalable value. It is doing fewer errors. So if a human is working, you can see they can suffer from fatigue, they might be sick, they might be lazy, and they can make mistakes. I mean, LLM can also make mistakes, but there are less chances of things like typos and other things, like copy paste things, and whatever is automated, it can be do. So people are moving from doing the task to supervising it. The automation landscape, if we go on the internet and then find out what are the different automation tools we can use to automate and create workflows like these, we'll find basically these 4, 5, 7 options. Okay. First one is Zapier. So Zapier provides you connections and best for like, it's for non-tech people specifically. Okay. Make.com is there, drag and drop scenarios, cheaper runs and everything. Power Automate is there. So in case you want to work in the Microsoft ecosystem, something with the OneDrive, something with the Word or something, then this would be the best pick, Power Automate. Then what is n8n, and why do you think that we should have chosen n8n for it? See, there are several reasons. n8n is open source. That means you can use n8n at 3 different places. 3 different places as in, one, on the n8n website, you can simply sign up, create an account, get a 14-day trial, and work on it on the website itself. Secondly, you can self-host it. So you can get a virtual machine, which will also show. You can get a virtual machine, pull the n8n resource there, and then simply run it there. Or you can use it locally on your laptop as well. So you can use it from like using it for free, to using it on your own infrastructure, to using it on the website itself, if you are ready to pay the cost. But that's not the biggest reason. The biggest reason is that n8n is providing the best AI use cases. So for agentic applications, wherever we need a language model, or whenever we need different kind of agents to work together towards a certain task, then n8n is the best choice. All the app integrations are also available in n8n.
and all the scalability thing is there. It is cost effective, most cost effective, because if you can just download and run it on your laptop, it is the best thing, right? Or on your own infrastructure, on your own virtual machine. All right. Now we see why agent N8N for agentic. It has native agent nodes. You can basically drag and drop a agent component. On that component, you can say that use this LLM. You can say that use these tools. You can have any models swappable. So OpenAI, Claude, or any model you can integrate with it. Self-hosted, your customer data stays on your server. It means that you're not using the public version of the same. You can run unlimited automations free of cost if you're running it on your laptop, and code when needed. So N8N is made for both kind of audiences. Suppose if somebody wants to work with code itself, if they are technical, if they are non-technical, both of the people can work with N8N. N8N currently supports JavaScript and Python. There is a uh, limited support for Python, but it is still coming. So when we see for simple tasks, any tools, even in your daily life, even for the freelance gigs that you are thinking of taking, you can have N8N, whether you know code, whether you don't know code, whether you want to use a website version or a like managed version, or whether you want to self-host it in your platform. So you can use N8N for those tasks, and it can be automated, right? You can use any model, like there are endless possibilities on the same. So workflow we'll see, and let's build it live. All right. So okay. Now to see, let's go to N8N website, n8n.io. Okay. N8n.io is the main homepage website where we see that again. What it says is exactly what it means. Build visually, go deep with the code, connect to anything. Every step of your agent's reasoning traceable on the canvas. Like this is the exact summary. If you have to understand what N8N can or cannot do for my workflow. So you can have AI agent workflows, you can see and control. Okay. When we come down, now this is a very interesting part, because here you see some examples here. IT ops. Okay. Now what we see, there is this trigger. Trigger as in the very, okay. Let us understand one more thing, that all of the different boxes that you are seeing here now, we're calling them, or like we call them nodes or steps. Like even in agentic AI frameworks like LangGraph and others, we have these boxes or whatever we have connected each other. We call them nodes only. Into N8N as well, we call them nodes or steps. See, now there is one starting step from which this entire workflow is running, right? When this entire workflow is running, it starts from here, which is on create user form submission. So we can see that there is a form which is creating a user. So whenever there is a submission into this create new user some form, so I want you to understand how to read a workflow like this. Okay. Then what we are doing is we are calling a AI agent. So for those of you who don't understand what are agents, so language model itself is a text-to-text thing, right? But if you want the language model to do some actions like fetch something from the web, do something, or use an external service, so all of that things, if you want to do, you basically create an agent. So agent is a wrapper over the language model which has access to the tools, MCPs, databases, and all the other things, right? If AI agent is clear till that point, then AI agent is available as a direct component into the N8N website. Okay, we get the AI agent. Now it is requiring three things, right? Look at it. Chat model. Chat model is basically the language provider. As I said, agent is a wrapper over the LLM language model. So it basically needs a language model. So here we can configure it using an Anthropic chat model. But here you can use anything, OpenAI, Gemma, open source models from Olama, or any language model. Direct connection can be provided from this model parameter. Just drag and drop and connect this to the AI agent.
Okay. Now coming back, we have a Postgres chat memory. If you look at this memory, what exactly is this memory? So LLM is using a memory as well. So there are different kinds of memory. Some kind of memory is like, okay, whatever message you have sent, just a message before that, like in session memory is there. We have, like, you must have seen it whenever you're talking to the chat GPT, it is also remembering the things from 1 week away, like 1 week before you mentioned this problem, maybe this is why you're doing this. So memory is there. So with the AI agent, we also have the functionality of using a memory, that we can configure it, that all of the chat that it is doing with the users, with us, it can use a long short-term memory, and it saves into a database, which is Postgres here in this case. Tools, when we see, it basically has access to these tools. So when you hear tools, you have to understand that tools are like hands of the language model. Like, you should understand it. Language model is there, tools, MCPs, memory. Agent is a wrapper over all of these things. So okay, this is a complete wrapper over these things, agent. Okay. When we have tools, so tools are like hands of the language model. Language model itself cannot do any actions on its own, so it needs these hands, which is these tools. Okay. So tools, when we see it, is it has access to two different tools. First one is Jira software. So Jira, we know that Jira is a software where we can manage the sprints, create items in the board. Like, it is used in the corporate management thing. Put down your meeting notes, create items, Kanban boards like to do, done, deployed, something like that, and then all of the other things, right? And Microsoft Entra ID. So Entra ID is something which is used for authentication. It's a part of RBAC, which is role-based access control. Okay. Then what it is doing is, whenever a create user form is submitted, now, like, understand it with me that what this entire workflow is doing. Whenever a create new user form is submitted, a AI agent has been triggered, which is using the language model of Anthropic, saves its memory to Postgres chat memory, and has access to the tools where it can check Entra ID, which is role-based access, and also check Jira software or perform actions on Jira. Now, what is this? This is a if statement. Okay, this is a condition, what we had in the traditional as well. But is this a manager? Okay, how will it know? Because create user form is submitted, then we see that according to its role-based access, is the person really a manager? If they are, what we see is add them to the channel, which is a Slack channel. So here we can have a Slack component, and we can see that you can add them to the channel. And if they are not, we can update their profile, which is update profile user. Okay. Now let's see what exactly is this workflow now. So this workflow, what it is doing is, it is basically accepting the all the submissions on the create user form. It is using an AI agent to which has access to your Microsoft Entra ID and Jira based on Anthropic language model. Okay. Now it is checking if it is a manager, and if they're a manager, they're adding it to the Slack channel, and if they're not, they're basically updating the profile. So this was an example of one IT ops automation that n8n shows. Okay. If anyone has any doubt in this part, please ask. Also, n8n has very great community support. You have any problem, you're facing anything, you can just join out their Discord, use the forum, and different things. So they are also providing you a lot of templates where you can work. Another example of, like, these are different examples, right? SecOps, which is on every new issues, extract the IP and domain. Now this is another component which is available from VirusTotal. Let's scan the URL and get the report. URL scan.io. So okay, you have to understand this as well. You can see there are two different lines going out of it, right? So what are these? These are basically parallel edges.
There are several tasks which we want that, okay, these can be done one after the another. So these are sequential tasks. But there are several tasks which are independent of each other. Like scanning the URL on Virus Total can be done at the same time while doing scanning the URL on urlscan.io, right? So what we do is we basically create two edges, make them parallel to each other. So now when this workflow will run, all of these two tasks will run in parallel, like at the same time they will run. So it will reduce our time as well as we'll have both of the results together at this point. So we divided all of them at this point and then we're merging the report here. So whenever a parallel edge is used, parallel nodes we have run, we will have to merge the reports. Okay. Once we have the merged report, we can post the result or somewhere. Okay. Make sense? All right. Several examples. You can just go look and see the same. Just understanding this is very important before we are building a workflow. And we come down, like there are over 500 integrations that are available. Okay, now we see, okay, build complex logics, which is there, where you code when you need it, UI when you don't. So this is for both the technical and the non-technical persons. Okay, now we come back and there are some use cases as well, like RAG is there. So you can go here and see different examples here. So once you understand these automations, you will get to know that whatever kind of automation you want to build, you can actually work on it. There are several use cases which are available here. Okay. When we see integrations, here we can see that these are the integrations which are available on n8n whenever you are looking to build. One more good thing, like Google Sheets is there. So suppose you want to work something on the Google Sheets, you can go to Google Sheet. It is opening right now. Now you see that it is saying create workflows with Google Sheet integrations. So now along with the Google Sheets, we see that, okay, these are the different automations I can integrate. Like along with the Excel, I can integrate these 799 integrations. Okay, so you know that which integrations are compatible with what things. Now see, this is the best section. Now here it shows that, okay, these people have built these integrations by using this Google Sheets. Okay, so Google Sheet integration was there. We see that, okay, these are the integrations which can be done with it. And below it, we see that, okay, generate AI viral videos with Seedance and upload to TikTok. This is the automation which was created by this user, which was using Google Sheets. So you can simply click on it and see the actual automation. So entire documentation of the same, and this is the automation which they made. Okay, you can see here that, okay, trigger start daily content creation, generate video, save ideas and metadata to the Google Sheets, generate detailed videos there. Then they're coming back to generate clips, generate video clips using Seedance, which is a video generation model. So this person has used Google Sheet to write their ideas into this automation. And they're using large language model and video generation tools to create content from them daily. So what we see is there are endless possibilities if we understand, like basic expectation was that you should understand what exactly are automations, why do we need business automations, why n8n is a right choice, and where all we can run it. So understanding the deployment part, then we will take a 5 minutes break because it will get too boring. Okay. Now we see, okay, if you want to use n8n online on the website, you can just n8ncloud.login, create an account. You don't have to provide any card. I don't have a paid plan here, but you can see that I have an open instance. It provides 14 days, which is enough to like start working and start producing something with it. So you can either just create an instance here, an open instance here,
What it will do, it will create a website version where you can work out everything. Okay. Another thing which you can use, how many of you are using Docker on your system? So Docker you can install on your system if you want to run into your own system, or if you want to use it on a hosted version. So you can say Hostinger N8N. Let's say you don't want to spend this $20 a month on this subscription. You can see if you want to use it on the website, this costs you 20 euros, right? Which has a limit of 2.5k workflow executions. So if you don't want to spend this 20 euros on it, this was hosted by N8N, you can self-host a version. How can you self-host a version? Either you can get a VM if you are a DevOps, or you can just say Hostinger N8N. So what Hostinger is doing here now, Hostinger is provided a self-hosted N8N so that you can use N8N on the Hostinger itself. Like you can see 599 a month. What does it have? It has a 1B CPU, 4GB RAM, and 40GB NVMe. So you can simply get this. So while you're doing this, what you're getting is you're getting a virtual machine, or what the non-tech people call a server. Inside that server, N8N will be automatically installed whenever it boots up. And then this server will be only for you if you pay this 599 to the Hostinger. Okay. So this server will be available to you and your friends or your clients over a public IP. Like they can just type a URL and then use it, anyone. But now comes the part that if you want to use it for completely free, like you want to use it just for yourself, just in your system. If you want to build a workflow for the public apps, you want to deploy it, then you need either one of these things. Either you need this self-hosted version using Hostinger or any other cloud provider, or you will need this subscription if you want to deploy this for your clients or something. Okay. Firstly, everyone, I should recommend that, okay, use the first 14 days of trial before you are getting something, and then get these other options. So first 14 days trial is completely free. Okay. Now comes the part that if you want to download it on your system and then use it. Okay. I'll come to this part. Docker download. So firstly, you will have to download Docker. Okay. Docker, what is Docker? Docker is a containerization application. So basically all the applications have different issues like version mismatches or something. So everything, all the applications, so N8N application has been containerized for us. Like we don't have to worry about this install, this install, this install. It is simply a container we can directly pull from the N8N and then use it. To do this, we have to install Docker Desktop and make sure that it is on. I already have this downloaded, so you can just simply do download for Mac, download for Windows, and all the other things. Just simply download it and open it. Okay. Once you do this, you can say Docker command, or you can say Docker pull N8N. Okay. Now we see this command. You have to go into your terminal, PowerShell, and simply run this command. Okay. What this command is doing is, this command is pulling N8N's images from the repository, and then it is doing it. So do you guys want me to do it right now, or you would like to try it yourself? So I already have Docker installed. Okay. Okay, I'm doing this. Okay, I think I uninstalled my Docker. Is my screen visible? Okay. So after you download your Docker, you see that, okay, this is a Docker application. You don't have to do anything here. Just open it. That's it. What it means is the daemon is running. Now you have to go to a terminal and just paste Docker install. Now what it is doing is, it is basically downloading the image. What you see is pulling from the N8N. Now it is doing downloading of the same. So when this download will be completed, you see this 5678.
5678 is the local port at which my N8N will actually run once this download is complete. So my URL of the same will be not the public IP, but it would actually be localhost 5678. So when I see I was using it on the web, I was using a genevala.app.n8n.cloud. But when I use it locally for free, the website is going to be localhost 5678. All right, let's see if it has downloaded. It will take some time for me. Like once it is downloaded, it will automatically start there. Okay. Are we clear till this point? Like what are the different ways which we can use N8N? And I know this is a long topic to sum up into 1 or 1.5 hours, but I'll try my best to make you understand the best. Till this point, if you have any doubts, please ask. We'll take a 5 minute break, a simple break. You can just go grab some water, tea, or anything. We're here only. Okay. Till then, I'm listening to the doubts. If you have any doubts, please ask. Till that time, my init is also getting pulled. All right. 5 minute break start now. Mm, 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 mm. All right. In case you guys have any doubts, you can ask in this meantime. आई थिंक पावनी इज गॉन ना, तो हम हिंदी भी यूज कर सकते हैं. हिमांशु, समझ आ रहा है आपको? कोई डाउट अभी तक भाई? ओके. कहीं भी डाउट हो ना तो बता देना या कमेंट कर देना, और अपना माइक खोल के ही बोल सकते हैं आप.
आशय, एनी डाउट्स? Not till now. समझ में आ रहा है? क्लियर है? It's all good. पर बता दूंगा अगर कुछ दिक्कत हो. ठीक है। कृतिका, डाउट्स? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने लगाया था हमारा डॉकर कंटेनर पुल होने पे ताकि हम उसको लोकली यूज कर सकें, राइट? वी सी उसने उसको पुल कर लिया है। नाउ व्हाट इट इज हैज हैविंग इज editor is now accessible at localhost 5678, which we discussed. Now we can press a O here to open it in the browser. क्या है इसको? तो सिंपली हम URL यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमने बात किया था, localhost 5678। यहाँ पे आपका आ गया है सेटअप योर ओनर अकाउंट। आपने यहाँ पे ओनर अकाउंट सेटअप करोगे, आपका सेम वर्कफ्लो सेटअप हो जाएगा। तो अस्कर, जैसे आप डेवऑप्स वगैरह का भी काम करते हो ना, आप उसमें क्या देखोगे ना, आपने सिंपली एक वर्चुअल मशीन लेनी है, ठीक है? जो भी आप एक वीएम लोगे, वीएम के अंदर आप SSH करोगे, ठीक है? एंड सिंपल डॉकर इंस्टॉल करोगे। जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किया है ना, अगर आपको सेल्फ होस्ट करना है तो आप उसके अंदर क्या करोगे कि आप डॉकर इंस्टॉल करोगे। डॉकर के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली ये वाला कमांड चला दोगे, ठीक है? जो हमने डॉकर से चलाया था कि डॉकर स्टार्ट दिस कंटेनर ऑफ एनिटन ऑन द लोकल होस्ट पोर्ट 5678, ठीक है? इस पे आपका चल गया 5678 पे। अब एक चीज और होती है, जब आप वीएम लेते हो, सो उस वीएम के नेटवर्क टैब के अंदर जो नॉन टेक है, प्लीज डोंट वरी, मैं इसका के लिए क्या कर रहा था, तो उसमें होता क्या है कि वीएम के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आपको कौन कौन से अपने पोर्ट्स पब्लिकली ओपन करने हैं, ठीक है? तो आप अपना पोर्ट अगर 5678 पब्लिकली ओपन कर दोगे तो आपका जो आपने वीएम पे लिया था उसके अंदर आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला एनएटन चला सकते हो, ठीक है? तो आपकी आईपी जो होगी वीएम की आईपी कॉलन 5678 पे आपका एनएटन चल जाएगा, विच विल बी रनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ वीएम का स्पेंड आएगा, ठीक है? नाउ लेट्स सी एनएटन के अंदर आगे क्या देखते हैं। देयर इज अ एआई असिस्टेंट, ठीक है? जहां पे अपना चैट करके बना सकते हो, जो सारी चीजें हैं नो कोड वाले लोगों के लिए। जैसे कीर्ति का वगैरह आप ट्राई करते हो ना कोई चीज ऑटोमेशन बनाने का, जैसे आपने लवेबल पर भी काम किया ना पहले, so you can use exactly the same चीज है कि आपने जो भी अपनी क्वेरी डाली क्या क्या आपको बनाना है, एंड देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेशन। और फॉर दिस ट्यूटोरियल वी यूज अ ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ वर्जन, ठीक है? ओके, नाउ वी सी दैट देयर इज अ क्रिएट वर्कफ्लो बटन यहाँ पे। व्हेन वी क्रिएट अ वर्कफ्लो हियर, यहाँ पे एक एडिटर खुल जाता है। इधर what we see is there is an option of build with AI, ठीक है? Where the chatbot will again open and you can tell it whatever you want it from, ठीक है? Or you can add your first step. हमने जो पहले डिस्कस किया था, what is first step into a workflow? A first step is something which we call a trigger, ठीक है? जो हमने वेबसाइट पे देखा था। Now trigger can be what? Trigger can be anything. जहां से हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो रहा है, एनीथिंग लाइक ट्रिगर मैनुअली, लाइक जब मैं बोलूँ एग्जीक्यूट करो तब एग्जीक्यूट करो उसको। ऑन ऐप इवेंट, किसी ऐप में कुछ हो रहा है, लाइक मेरे को मैसेज आ रहा है, मुझे मेल आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तब इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करो। या एक शेड्यूल पे, तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस, व्हेन यू सी ना कि व्हेन यू आर मेकिंग इट अप फॉर अ क्लाइंट और समथिंग, देन यू सी दैट ओके आई वांट दिस वर्कफ्लो टू रन 12 AM एवरी डे, लाइक सुबह सुबह मेरे को सारी रिपोर्ट आ जाए। व्हेन वी सी दैट इस फॉर्म पे कोई सबमिशन हो, तो हर वर्कफ्लो का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है व्हिच वी कॉल दिस ट्रिगर। तो जैसे ही आप अपना प्रॉब्लम और यूज केस डिसाइड करोगे, उसके बेसिस पे यू फाइंड अ ट्रिगर फ्रॉम दिस पॉइंट।
ठीक है, अभी आई एम डूइंग ट्रिगर मैनुअली एक बार के लिए, या मैं कर सकता हूँ ऑन अ फॉर्म सबमिशन भी है यहाँ पर, ठीक है, और आई कैन ऑल्सो सी मेल यहाँ पे, ठीक है। आपने लास्ट वीक अगर देखा होगा वेयर वी बिल्ट अ जॉब फाइंड वाला सिचुएशन, ठीक है, कि आपके ईमेल जो आ रहा है उस पर आप कर सकते हो, so there is a trigger available on message received which is saying that okay, when a message is received on the email, ठीक है, now what we are doing is यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, अपने जीमेल अकाउंट पे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट कैसे करते हैं, क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल, ठीक है, साइन इन विद गूगल। यहाँ मैंने क्या किया, आई बेसिकली साइंड इट यूजिंग अ गूगल अकाउंट। I have to give permission to this app that okay, you can read all my emails. Do continue here. Now Gmail account 2 is synced. That's it. अब इसके बाद होगा क्या ना, कि मेरा जो पूरा वर्कफ्लो है आई विल बी एबल टू चेक इट, ठीक है, मतलब कि एवरी ईमेल कमिंग टू दिस सेकंड अकाउंट विल बी विजिबल हियर। ओके, व्हाट आई विल डू इज, मेरी स्क्रीन बंद हो जाती है तो बता देना जब बंद हो तो, while I do this, okay। सो मोड चेक कितने टाइम पे करना है, होल टाइम जो होता है, हर मिनट चेक करता रहे, हर घंटे चेक करता रहे। इवेंट इज मैसेज रिसीव्ड, ठीक है, दिस इज द इवेंट व्हिच इज द ट्रिगर। अब ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने का ना एक तरीका और है कि ट्रिगर के बगल में यू सी दिस जैप साइन, सो यू सी दिस थंडर साइन, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रिगर साइन, ठीक है, व्हेन यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो। नाउ टू टेस्ट इट व्हाट वी विल डू इज, let's send an email to this email which says a JD, okay। I'm sharing an email to this email ID so that it can be fetched here. I'm saying available job opportunity, okay। I can simply use this to like write a sample GD of a AI engineer, ठीक है। Write a AI engineer job opportunity available for them and the JD। मैं अपने ईमेल पे एक भेज रहा हूँ, लाइक अगर आपके ईमेल पे आते हैं जॉब रिकमेंडेशंस एंड एवरीथिंग, सो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली सेंडिंग इट टू दैट यूजर, ठीक है, आपने इसको यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ऑटोमेशन, ठीक है, इस पे आते हैं। नाउ आई कैन सिंपली क्लिक ऑन फेच टेस्ट इवेंट्स, ठीक है, ओके। इसने पुराना उठाया है, ये वाला नहीं उठाया है, जस्ट एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो। ये देखो, नाउ व्हाट इट हैज डन इज, जो मैंने ईमेल भेजा था, दैट ईमेल वी हैव गॉट हियर, डियर हर्ष वी हैव एक्साइटिंग एआई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू। ये हमारे पास जो हमने ईमेल भेजा था, दैट ईमेल इज हियर अवेलेबल टू अस नाउ। सो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, यू कैन सी स्कीमा के हिसाब से हाउ इट इज लुकिंग, दैट उस ईमेल के साथ साथ एक आईडी है, एक थ्रेड आईडी है, एक स्निपेट है उसका पूरा, हिस्ट्री आईडी एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल। So depending upon the automation, you can just use these values, drag and drop करके ही to build your workflow. Table के अंदर you have a table view of it, and JSON के अंदर you have a view की जो मैंने email भेजा उसके different चीजें क्या हैं। Now, so that I can use it again and again, मैं बार बार execute करके mails नहीं भेजूंगा, I can just click on this pin data, like ये वाला डेटा मेरे टेस्ट एग्जीक्यूशंस के लिए एज अ एग्जाम्पल यूज हो जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक, नाउ व्हाट वी सी ना, इस जीमेल से मेरे पास
ईमेल कैप्चर करने की एबिलिटी आ गई है. नाउ एवरी ईमेल व्हिच इज कमिंग ऑन दिस जीमेल आईडी, आई कैन गेट दैट, which is polling every minute. So every minute it will run. ठीक है? For every email coming on my Gmail, it will run this workflow. Now, let's see what can we do next. ठीक है? We can use AI वाले components यहाँ पर. So AI nodes are there. We're just using an AI agent, Anthropic or anything. We can use all of these components. Let's say if I want to analyze this requirements and say like how should I prepare for the interview. Let's say that job JD or something is coming that okay this job opportunity is available. I'm taking an example right now, it's very spontaneous. That we have to do is we have to prepare some interview questions for it. Okay, then what we'll do is we'll get a basic LLM chain. ठीक है? Now see, a basic LLM chain is there. So what it is doing is it is nothing but LLM की call जानी है इसके अंदर and then that's it. ठीक है? Now before we make the LLM call, ये एजेंट नहीं है तो यू कैन सी दैट देयर आर नो टूल्स इन इट. दिस इज जस्ट अ बेसिक एलएलएम. एक मॉडल इसको चाहिए. ठीक है? मॉडल यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आप देखेंगे. यहाँ पे मॉडल यहाँ पे आप जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं यू कैन यूज ऑल ऑफ देम. ठीक है? व्हाट आई विल डू फॉर दिस केस इज आई यूज ओपन राउटर, जहां पे आप अपने कुछ क्रेडिट्स डाल के आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं. ठीक है? आई हैव दिस ओपन राउटर नोड हेयर. ओपन राउटर को आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडेंशियल के अंदर आप अपना क्रेडेंशियल कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं. इनकेस अगर आपके पास ओपन एआई है तो आप सिंपली ओपन एआई यहाँ पर लेके आइएगा. ओपन एआई चैट मॉडल. ठीक है? ये मॉडल आप लेके आएंगे और इसके अंदर आप सेटअप क्रेडेंशियल करके अपनी एपीआई की डाल देंगे. समझ गए? तो यहाँ से आपका ओपन एआई का मॉडल यूज होना स्टार्ट हो जाएगा. या फिर व्हाट यू कैन डू इज अगर आपको लोकली मॉडल यूज करने हैं, जिन भी यूज केसेस में यू वांट टू यूज अ लोकल मॉडल, वहां पे आप ओलामा यूज करेंगे. सो दैट मॉडल विल बी रनिंग इनटू योर ओन सिस्टम ओनली. ओलामा चैट मॉडल. ठीक है? ओलामा चैट मॉडल आप लेके आएंगे. इसके अंदर व्हाट यू नीड इज सेटअप क्रेडेंशियल में आप गए और ये बेस यूआरएल इज व्हाट मैटर्स. सो अगर आप लोकली करते हैं ना ओलामा पे रन, ओलामा रन दिस मॉडल, देन इट इज रनिंग ऑन द मॉडल्स ऑन द दिस यूआरएल 11434. ठीक है? यहाँ पे यू डोंट नीड एपीआई की इन दिस केस बिकॉज उसमें चल जाएगा, बिकॉज लोकली मॉडल है तो उसमें ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं है. सो मतलब एंड कंक्लूजन इज यू नीड एनी चैट मॉडल व्हिच वी कैन यूज. नाउ फॉर दिस मॉडल वी कैन कनेक्ट दिस विद इट ऐसा. ठीक है? नाउ एक बेसिक एलएलएम चेन जो है उसके साथ मेरा एक लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइडर कनेक्ट हो गया. अब वो रन कैसे हो रहा है? रन हो रहा है एक जीमेल के ट्रिगर पर. ठीक है? नाउ बेसिक एलएलएम एग्जांपल की हम बात करें, जो चेन हमने बनाई है. नाउ सी प्रॉम्प्ट के अंदर क्या जा रहा है. ठीक है? प्रॉम्प्ट के अंदर एक यूजर मैसेज जा रहा है, रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट. अगर हमें कोई इनपुट चाहिए, मतलब कि कोई आउटपुट चाहिए जो विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप. ठीक है? देन वी कैन सिलेक्ट दिस अनेबल फॉल बैक मॉडल. अगर मेरा ये मॉडल ना चले तो कोई और मॉडल यूज कर सकते हैं. ठीक है? कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड. ओके, अब इसमें ये कर सकते हैं हम डिफाइन बिलो. ठीक है? यूज एन एक्सप्रेशन और रेफरेंस डेटा इन द प्रीवियस नोड. लेट्स से इफ आई वांट कि मेरे इस जीमेल के अंदर जो स्कीमा पे जाऊंगा, ये स्निपेट था. लाइक दिस इज समथिंग व्हिच इज यूजफुल राइट. ये स्निपेट था, मैं स्निपेट का एनालाइज करूं तो उस एलएलएम चेन के अंदर आई विल हैव टू पास द स्निपेट है. प्रॉम्प्ट जो यूजर मैसेज के अंदर आया है सेम वे जैसे हम एलएलएम के साथ काम करते हैं. नाउ हाउ डू वी रेफरेंस इट. ठीक है? ये स्निपेट है, ये पहले मैं लिख लेता हूँ. लाइक दिस इज अ job opportunity. Prepare 10 questions which I need to know before appearing for this interview. Here is the job description. ठीक है? Snippet आप सिर्फ drag and drop है. ठीक है? ये देखो अब क्या हुआ. यहाँ पे हुआ क्या कि
हमने एक एलएलएम बनाया यहाँ पे जिसके अंदर कॉल जा रही है कि देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, यू हैव टू प्रिपेयर 10 क्वेश्चंस फॉर दिस, और जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा ये है। ठीक है, अगर आप जेसन में आउटपुट चाहते हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं, वरना आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू इज we'll just execute this step. Now see what happened. If you share dot cut off, कट ऑफ का मतलब क्या है कि ये वाला जो हमने मैसेज शेयर किया ना, ये पूरा नहीं गया, पूरे वाला मैसेज कोई दूसरा है। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड दैट, वो कहाँ पर है। लेबल, लेबल्स इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम्म, यहाँ पर दिखा नहीं वो, सिर्फ स्निपेट आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो हमने जीमेल अकाउंट सेटअप किया उसके अंदर लेटेस्ट वाला फुल मैसेज नहीं आया है। ठीक है, तो जीमेल ट्रिगर है रीड, जीमेल में मैं आता हूँ। ठीक है, गेट अ मैसेज वी कैन यूज कि एग्जीक्यूट स्टेप, गेट अ मैसेज में चाहिए इसको मैसेज आईडी। ठीक है, तो हमें मैसेज गेट भी करना पड़ेगा। इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास मैसेज आईडी है कि नहीं। ठीक है, इसके अंदर वी हैव अ आईडी। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम इस आईडी को गेट अ मैसेज में ट्राई करके देखते हैं कि इफ वी कैन गेट इट और नॉट। उसके लिए हमें क्या चाहिए ना, वी नीड अ एक्सट्रैक्टर, कि वो जो पूरा इसका आउटपुट जेसॉन आया है, लाइक दिस इज अ एंटायर जेसॉन राइट, बट मुझे इसका सिर्फ ये आईडी चाहिए विच आई कैन पास टू द गेट अ मैसेज। ठीक है, नाउ आई विल यूज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर I can use a filter. Keep only the items matching a condition, or we can have basically, let's look for a component where we can just do this. Edit fields, modify, add, remove from the fields, or okay, ठीक है। तो बेस्ट हमें ये लग रहा है कि इसमें हम एडिट फील्ड का तो यूज कर सकते हैं एक बार। अब देखिए, हम ये वाला कनेक्शन हमें डिलीट करना पड़ेगा। बिफोर दिस गोज आई हैव टू गो टू एडिट फील्ड्स। एडिट फील्ड्स में मैनुअल मैपिंग और जेसन। ठीक है, यहाँ पे वी कैन गेट द आईडी, दैट्स इट। ठीक है, अभी हम एग्जीक्यूट स्टेप कर रहे हैं तो वी सी कि हमने सिर्फ जो आईडी रखी थी ना, वो सिर्फ आईडी हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, मेक सेंस। अब ये आईडी जो हमारी आई है, व्हाट वी कैन डू इज इस आईडी को वी कैन सेंड टू गेट अ मैसेज। ठीक है, ताकि हम उस मैसेज को लेके आ सकें। वी एग्जीक्यूट दिस वर्क फ्लो। नाउ वी सी पैरामीटर मैसेज आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैसेज आईडी उसको चाहिए। अंदर हम क्या करेंगे, उसको चाहिए क्या, इसको चाहिए मैसेज अंडरस्कोर, बता दे भाई क्या चाहिए, मैसेज आईडी चाहिए उसको। ठीक है, इधर हमारे पास आईडी था। ठीक है, सेटिंग्स, स्टॉप वर्कफ्लो, आई कैन यूज समथिंग एल्स जिसमें हम फिल्टर कर सकें। फिल्टर में अगर हम जाते हैं execute previous note, ठीक है, we can get this id
ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। गेट अ मैसेज को हमें देखना है कि जीमेल अकाउंट में एडिट फील्ड्स में जो आईडी आ रही है उस आईडी को हमें यहाँ पास करना है। ठीक है, मैसेज आईडी के अंदर। सो दिस वाज अ मिसिंग पॉइंट कि इस पर हमने आईडी कनेक्ट किया था, तो आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम ये मैसेज आईडी के अंदर डाल देंगे। अब हम एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं एंड लेट्स सी इट शुड बी एबल टू गेट द ईमेल हियर। गेस व्हाट, ये पूरा ईमेल दे ही नहीं रहा है, अलग ईमेल यूज करने में भी। Get a message is there, reply to a message is there, create a label, copy a label, get many drafts, and then पूरा मैसेज नहीं दे रहा, so this is a problem here. Could be, ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस में एडिशनल प्रॉपर्टी है, सो अटैचमेंट प्रीफिक्स और डाउनलोड अटैचमेंट से रिलेटेड है, बट फुल मैसेज देने का ऑप्शन अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें देखें, इंक्लूड स्पैम एंड ट्रैश, इंक्लूड ड्राफ्ट्स, लेबल आईडी, सर्च, रीड स्टेटस, सेंडर, नहीं है यहाँ पर। ऑलवेज आउटपुट डेटा, एग्जीक्यूट वंस, और यहाँ पे फुल मैसेज का नहीं है। लेट्स चेक, मैंने एक और वर्कफ्लो बनाया था उसके अंदर इफ दिस इज वर्किंग। एग्जीक्यूट द वर्कफ्लो ब्रो, एग्जीक्यूट ही किया था हमने, बट स्टिल सी इसके अंदर, हाँ अभी आ गया, टेस्ट में ही चल रहा था वो। ठीक है, कमिंग बैक, फिल्टर हमारा हो गया था। ठीक है, बेसिक हम चेंजिंग के पास हम आ गए थे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेसिक चेंज के अंदर स्निपेट की यूज करने की जगह व्हाट विल डू इज विल गेट द डेटा। मैंने कनेक्ट किया, इसको नहीं किया अभी। ठीक है, ये हमने बेसिक चेंज से कनेक्ट किया, यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ गया है। ठीक है, टेबल जेसन, जेसन में अगर हम देखेंगे तो हमारा फुल इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, ये रहा। HTML के अंदर हमारा पूरा है, इसके अंदर टेक्स्ट में भी होगा। टेक्स्ट इज देयर राइट, इस टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे अब हमारा सिर्फ टेक्स्ट अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे राइट, यू विल सी, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ व्हाट वी आर एबल टू गेट इज हियर आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ एआई इंजीनियर। यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एआई मॉडल्स आई विल बी वर्किंग ऑन, कुड यू प्रोवाइड मोर इंटरव्यू डिटेल्स अबाउट द करंट। तो ये तो आ गया 10 क्वेश्चंस व्हिच आई नीड टू नो बिफोर अपीयरिंग फॉर इट्स इंटरव्यू, वी कैन से एट द कंपनी। ठीक है, इधर वी कैन एग्जीक्यूट द स्टेप। नाउ दिस इज अ वर्कफ्लो, what are the some of the existing AI systems that I would be expected, so ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। now I want कि ये मेरे को वापस से ईमेल पे बैक मिल जाए, then I can go back, get the Gmail component again, and I can say send a message। send a message बोले तो मेरे को सेम ईमेल से मैं अपने आप को एक ईमेल कर सकता हूँ राइट। मैसेज यहाँ पे मेरे को जाएगा, ऑपरेशन सेंड है, टू क्या होगा, यहाँ पे मैंने अपना ही ईमेल डाल दिया। सब्जेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई नीड टू प्रिपेयर। ईमेल HTML में जाएगा। ठीक है, क्या मैंने कनेक्ट किया है इसको, अभी कनेक्ट मैंने अभी नहीं किया इसको, तो मैंने सेंड कर दिया इसको अपने आप को ही। ठीक है, इसके अंदर भी सी कि ये जो टेक्स्ट था यहाँ पर आ गया, बट ईमेल्स के अंदर क्योंकि HTML चल सकता है, तो आई कैन यूज द HTML एज वेल यहाँ पर। ठीक है, तो आई कैन से आउटपुट, जाओ इसमें आउटपुट मोड भी तो अवेलेबल है।
batch processing is there, settings, ठीक है. Okay, provide a response in HTML. ठीक है. अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये रिस्पॉन्स देगा HTML में. आ गया. यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट भी हम कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम देखें HTML में तो ये सब नीड तो है नहीं ऐसे. ठीक है. अब इसमें हम साइड मैसेज में जाएंगे एंड वी हैव दिस टेक्स्ट. सो मैसेज के अंदर हम ये टेक्स्ट लिख सकते हैं. ठीक है. विच इज काइंड ऑफ HTML. हम क्लीन वगैरह कर सकते हैं उसको एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट इट. सो नाउ इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं एंड देखते हैं कि ये जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा था, आर वी एबल टू क्रिएट क्वेश्चंस एंड गेट इट ऑन द जीमेल ऐप. ठीक है. हमने क्या एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, यहाँ पे नोट्स रन हुए, ये रन हुआ एंड आई शुड रिसीव अ मैसेज ऑन जीमेल. तो दूसरी आईडी है. ओके. इंटरव्यू क्वेश्चंस आई नीड टू प्रिपेयर. और ये क्वेश्चंस मेरे, ओके मैंने दूसरा टैब शेयर कर रखा है. ठीक है. यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन से ये क्लीनिंग वगैरह हम कर सकते हैं उसके अंदर. इंटरव्यू क्वेश्चंस आई नीड टू प्रिपेयर. सो लाइक दिस वर्क सेंड ईमेल हैज बीन सेंड विद एनी टाइम. ठीक है. इससे हमने क्या किया, हमने एक बेसिक ऑटोमेशन बनाया. जो ऑटोमेशन क्या कर रहा था कि मेरे पास जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के ईमेल आ रहे हैं उन सब के ऊपर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी हम एक लैंग्वेज मॉडल से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस हमें मिल जा रहे हैं. यूजिंग दिस वी कैन बिल्ड अ सेट ऑफ ऑटोमेशंस सो दैट वी कैन डू थिंग्स लाइक मेरे को जो भी जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड ईमेल्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, ना उसके ऊपर काम कर सकता हूँ. ठीक है. सो दिस वाज अ बेसिक LLM चेन. इसके अंदर हमने बस एनालाइज किया था एक LLM को यूज करके. ठीक है. तो आप लोग भी घर जाके बना के देख सकते हैं सिमिलर चीज यूज करके. कोई डाउट है तो बताइए अभी तक. एनीवन? ओके, ग्रेट. ठीक है. अभी इसके अलावा ना अपने को जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए एक AI एजेंट. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बेसिक LLM चेन जिसके अंदर हम बस एक लैंग्वेज मॉडल की कॉल यूज कर रहे हैं, वी कैन गेट अ AI एजेंट. AI एजेंट के पास क्या चीजें हैं, यहाँ पे देखने वाली बात है कि AI एजेंट को भी एक वो चाहिए, चैट मॉडल चाहिए. तो वी कैन कनेक्ट इट टू अ चैट मॉडल. यहाँ पे हम कुछ टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम टूल्स देखेंगे, टूल्स हमारे पास काफी होंगे. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क जो हैं उन सब के अवेलेबल हैं. लाइक मैं वेदर सर्च करूंगा तो ओपन वेदर ऐप आ गया यहाँ पे. ठीक है. तो ओपन वेदर का मैं कर सकता हूँ रिटर्न करंट वेदर डेटा. ठीक है. ये मेरा एक टूल है. आई कैन बेसिकली कनेक्ट इट. इसको टूल मोड में नहीं आ गया ये. ओपन वेदर टूल. ठीक है. इनपुट फ्रॉम AI. इनपुट फ्रॉम AI करके उसके अंदर एज अ टूल ये कनेक्ट हो गया. ठीक है. इसके अंदर वी कैन पुट सम क्रेडेंशियल. ठीक है. एक्सेस टोकन इज देयर. इश्यूज सिटी पैरामीटर इज रिक्वायर्ड. मैपिंग फ्रॉम AI आएगा यहाँ पे. नो इनपुट कनेक्टेड. Chat model is there. Okay. Let the model define this parameter. ठीक है. Language, let the model define its parameter. ठीक है. यहाँ पे जब हम कर रहे हैं सेटअप credential तो यहाँ पे we'll need the access token. So we can go to open weather.
विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, मेरे पास होगा तो ठीक है। यहाँ पे आई कैन गो टू माई एपीआई कीज एंड जनरेट अ न्यू वन। ये N8N डेमो यहाँ पे जनरेट हो गया। आई कैन जस्ट कॉपी दिस, come back to my N8N and provide this, but not connect with these settings. Access tokens. क्या हो गया भाई? सिटी अगर मैं दिल्ली डालूं, लैंग्वेज अगर इंग्लिश डालूं, ऑथराइजेशन फेल्ड, इनवैलिड एपीआई की। लेट्स सी एपीआई की में क्या दिक्कत आ गई। टेस्टिंग एक्सेस टोकन्स। My API keys intended as many keys and this, and then access token. We use this. Hmm. तो बेसिकली टूल्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बट ओपन वेदर में दिक्कत आ रही है। इनवैलिड एपीआई की, why is this showing a invalid API key? Let's see. This should work. Hmm, कर तो हम सही रहे हैं, बट ये इनवैलिड बता रहा है। Please check your credentials. यार ओपन वेदर कुछ दिक्कत दे रहा है। We can use some other tool. ठीक है। Other tool can be anything like hmm, I can say maybe Gmail का टूल भी अवेलेबल है यहाँ पे, SQL का भी है, Git का भी टूल है। So Git tool यूजर के देखते हैं। Tool description is there. Repository path we can provide here. P5 का MCP is there, Wix का MCP, बहुत सारे tools हैं which we can like integrate with it. Just depending upon the specific use case. If we see कोडा का tool है तो setup I can I don't know ये free है कि paid है कोडा का। I do use कोडा। Let's see if we can get its access token. तो जो भी हम एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना, हमें उसका एप्लीकेशन टोकन लगेगा या एपीआई की। ठीक है। API connections is there. Generate API token. I said N8N demo. Generate API token. Copy token. I can come back to my N8N instance and paste the token here. ठीक है। अभी यहाँ पर
ये हो गया है। एग्जीक्यूट में डॉक नेम और आईडी हर्ष कोड़ा प्लेग्राउंड जो तो यहाँ पे था, टेबल नहीं है उसमें, इनको टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन सी इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे मैपिंग में फ्रॉम एआई। ठीक है, सो नाउ दिस इज अवेलेबल एज अ टूल। ऑलराइट, यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक एआई एजेंट बनाया जिसके अंदर हम सेम चीज कर सकते हैं जो हम इसके अंदर कर रहे थे, बट यूजिंग tools. So all the different tools which will connect here will be available now, and it will also be able to do the things. But now let's see. जैसे पहले हमारे पास एजेंट के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं थे, नाउ द टूल्स विल बी अवेलेबल इन दिस थिंग, राइट। सो प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज है इसके अंदर हमने दिया था, and इसके अंदर जब हम जाएंगे तो यही प्रॉम्प्ट हम इसके अंदर दे सकते हैं, बट नाउ इट विल हैव टूल्स। ठीक है, हमने ये इनपुट इस पर नहीं दिया है अभी, तो वी कैन जस्ट प्रोवाइड दिस इनपुट बेसिक एलएलएम चेन की जगह, एंड देन ये हमारा सेम काम कर रहा है, बट इट विल नाउ हैव द टूल्स अवेलेबल विद इट, एंड देन इट कैन सेंड द मैसेज। ठीक है, इसमें हम अगर व्हाट्सएप की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ इसको, यहाँ पे कह रहा है वो अनडिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे वो आउटपुट बन चुका है, राइट। हम आउटपुट लेके आएंगे यहाँ पे एंड नाउ इट विल वर्क। सी, ठीक है, चल गया वर्क फ्लो। टूल यहाँ पे अगर यूज होगा, उसको लगेगा कि टूल चूज करना है तो टूल चूज कर लेगा। अभी कोडा वाला टूल इज नॉट रिलेवेंट, सो इसका भी अब एजेंट बन गया है ये। ठीक है, सो कमिंग बैक, रिफ्रेश, एंड द सेम चीज, अभी एक एजेंट काम कर रहा है रादर देन अ सिंपल एलएलएम की कॉल। वही है, अपनी एक मेमोरी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं तो आप पोस्टग्रेस हो गया, या फिर आप सुपरबेस हो गया तो सुपरबेस की एक मेमोरी डाल सकते हैं, एंड ऑल ऑफ द डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू हियर। ठीक है, अगर वेक्टर डेटाबेस आपको यूज करना है राग वगैरह यूज करने के लिए, तो वी कैन यूज अ वेक्टर स्टोर हियर। ठीक है, सो गेट रैंक डॉक्यूमेंट ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया ये रहा, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, गेट क्रोमा वेक्टर, एंड देन इसको वी कैन कॉन्फ़िगर, और जितनी भी चीजें थी आप एलएम से रिट्रीव करा के राग सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द व्हाट्सएप वाला यूज केस यार, कि कमिंग बैक अगर हमें व्हाट्सएप पे यूज करना है तो इट इज वेरी सिमिलर थिंग जैसा हम इस एलएलएम चेन और एआई एजेंट के साथ कर रहे थे। तो वी कैन डू द एग्जैक्ट सेम चीज विथ अ व्हाट्सएप मैसेज। अब व्हाट्सएप मैसेज चेंज करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे रिलायबल सर्विस विच यू कैन यूज इज ट्विलियो। ठीक है, ट्विलियो में वी कैन से सेंड अ एसएमएस, एमएमएस और व्हाट्सएप मैसेज। देन इसमें देखते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ना सैंडबॉक्स मोड में रन करेंगे। क्यों सैंडबॉक्स मोड में रन करेंगे, क्योंकि हमें ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का इंटीग्रेशन चाहिए होता है टू बी एबल टू सेंड टू एनीवन। तो हमें पहले एक सैंडबॉक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा बिफोर वी सेंड दिस। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज हम इसको, ओके वी हैव अ डाउट, इज लाइक as a data analyst what kind of projects I can build with it and how can it be used to run my field. So यार एज अ डेटा एनालिस्ट ना आप देख सकते हैं कि आपका डेटा विल बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। कुछ डेटा आपका प्रेजेंटेशंस में रखा होगा, कुछ सीक्वल में रखा होगा, एंड डेटा एनालिस्ट का मेन काम वही तो है कि आपको डैशबोर्ड बनाने हैं, रिपोर्टिंग बनाने हैं। ठीक है, सो यू कैन से कि जैसे जैसे रियल टाइम डेटा अगर आपके पास आ रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एग्रीगेट ऑल द डेटा। सो जो ट्रिगर आपके पास किसी भी डेटा सोर्स पे आया है, यू कैन हैव मल्टीपल ट्रिगर्स एंड दैट यू कैन गैदर ऑल द डेटा टुगेदर। एलएलएम मॉडल हो गया, आप इसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल भी चला सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन रन ऑल ऑफ दैट, और वो सारा का सारा आप एक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं इसका। ठीक है, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स एंड एवरीथिंग यू कैन मेक। सो आई थिंक ये काफी अच्छा एक इनिशियल प्रोजेक्ट होगा which you can use using data from multiple places, aggregating it, analyzing it, and creating a reporting dashboard or a report. ठीक है, कमिंग टू व्हाट्सएप अगर हम आते हैं, सो वी सी ये वाला जो नंबर है ना, फ्रॉम नंबर,
ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक सैंडबॉक्स का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे क्या, हम ट्विलियो पे जाएंगे और ट्विलियो पे जाके हम एक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, ट्विलियो पे आए, हमने लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट पे। ठीक है, अभी अगर हम ट्विलियो के अंदर आते हैं तो हेयर यू कैन बेसिकली गेट सम नंबर्स। इधर अगर आप आएंगे, ये जो बॉक्सेस बने हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मैसेजिंग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली मैसेजिंग में दिख जाता है, मेरे को याद नहीं है सर्विसेज, यहाँ पे मैसेजिंग सर्विस हो गई, सर्च कर सकते हैं सिंपली हम व्हाट्सएप। टेस्ट यहाँ पे आता है, सेंड योर फर्स्ट व्हाट्सएप सेंडर, एंड ये यहाँ पर भी आ जाता है, स्टैंडर्ड टेस्ट। हम्म, सो इधर देखते हैं कि हमारा कहाँ पर है, ये रहा। इधर सैंडबॉक्स के अंदर हम कर सकते हैं, सो टू यूज अ सैंडबॉक्स हम यहाँ पर इसमें जा सकते हैं। ठीक है, ट्राई व्हाट्सएप पेज एंड टू द सैंडबॉक्स, दिस इज द यूआरएल। मैं आपको फाइनल उसमें दे दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर मैं एक बार व्हाट्सएप वेब लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि मैसेज आ रहा है। Let me use it from the other number. ठीक है, so मैंने अपना व्हाट्सएप वेब लॉगिन कर लिया है। लेट्स सी कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन मोड, तो हम किसी को भी मैसेज ऐसे नहीं भेज सकते हैं, राइट? तो हमें एक कोड भेजना पड़ता है सो दैट वी कैन यूज अ प्रोडक्शन मोड। ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर, सेंड टू वर्चुअल फोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या सैंडबॉक्स को में ज्वाइन करना है। ठीक है, मैसेजिंग सर्विस में मैं जाऊंगा फोन नंबर की जगह। आई कैन से ओके दिस इज द मैसेजिंग सर्विस व्हिच वी आर मेकिंग टू, तो नहीं, सेंड टू पर्सनल नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल नंबर में क्या करना पड़ेगा, एक मैसेजिंग सर्विस जो बनी हुई है यहाँ पे, आई कैन से टू नंबर में वी कैन select द नंबर। व्हाट इज माई नंबर, मुझे याद नहीं है, 63292। हे, नाउ इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा कंट्री कोड। ठीक है, कंट्री कोड हम डाल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं मैसेज आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है मतलब सैंडबॉक्स मोड हमारा एक्टिव नहीं है। तो मैसेज यहाँ पर अभी नहीं आया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बताया था कि जस्ट बिकॉज आप जो चीज है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इट इज ओनली इन अ सैंडबॉक्स मोड। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए,
कॉन्फ़िगर करने के लिए हम उसको करेंगे ये कि जो ये नंबर है जिससे ये आता है, मैसेजिंग में हम आएंगे बैक टू, ठीक है। इधर आके हम ट्राई व्हाट्सएप पे करेंगे। हम्म, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो चीजें हैं, अब देखेंगे यूज अ व्हाट्सएप मैसेज एंड सेंड फ्रॉम अ डिवाइस, इस नंबर के ऊपर वी हैव टू सेंड दिस कोड, ठीक है। हाउ डू वी डू दिस? वी डू दिस बाय गोइंग टू द न्यू चैट, इसको हम मैसेज भेजेंगे, ठीक है, एक कोड वाला। नाउ वी हैव टू सेंड दिस जॉइन वैल्यू डेवलप, ओके। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं कि ट्विलियो के अंदर जैसे हमने जॉइन वैल्यू डेवलप किया, तो यहाँ पे व्हाट इट हैज डन इज इट हैज बेसिकली लॉग्ड मी आउट, ओके। बट पॉइंट इज कि हमने उसका सैंडबॉक्स मोड ज्वाइन कर लिया है। नाउ दैट विल बी एबल टू ब्रो, ओके। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे ही कुछ दिक्कत है, विदाउट रीजन बैन हो जा रहा है। आई एम यूजिंग दूसरा व्हाट्सएप नंबर। एक वन टाइम सेटअप है, एक बार आप कोड भेज देंगे देन यू विल बी एबल टू यूज इट। ओके, ऑलराइट, नाउ वी कम बैक टू हियर and we get this number, सैंडबॉक्स से तो कनेक्ट हो गया वो, लेकिन इस नंबर में इशू आ गया, ठीक है। नाउ वी गेट दिस नंबर जो मैंने 12 का था। यार मेरा ना सिस्टम में कुछ दिक्कत है, फोन पे दिखा दूंगा। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट विल यू, ठीक है। वीडियो का अगर नंबर इसमें है तो अच्छी बात है, वरना ले आते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम बैक अपने उस पे, मैसेजिंग वाले पे, एंड देन लेट्स सी कि वो मेरा नंबर कहाँ पर है, ओके। तो नंबर वाज दिस। इसके अंदर वी कैन डू दिस जॉइन वैल्यू डेवलप पे यार, ठीक है। यहाँ पे मेरा सैंडबॉक्स एक्टिव हो गया है। अब इससे पहले मेरा व्हाट्सएप बंद हो, लेट्स डू दिस, ठीक है। कंटेंट मैसेज हो गया यहाँ पे, ये तो सब चीजें हैं। बट नाउ इफ यू गो बैक टू आवर सेंडर एंड देन ट्राई टू सेंड अ मैसेज, लेट्स सी। ओके,
हाँ गया मेरा टैब, राइट, ये वाला शेयर हो रहा है, राइट, ठीक है। बिजनेस नीड व्हाट्सएप नंबर, इस पे जाना है, दिस इज 2, राइट, 2 इस नंबर पे जाना है। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स में हो गया, ये वाला मैसेज जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज एक ऐड कर दिया, एंड प्रोसेसिंग बाय द कैरियर, सेंड टेम्पलेट मैसेज, ठीक है। ये टेम्पलेट मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। नाउ लेट्स कम बैक एंड सी हियर, योर अपॉइंटमेंट इज कमिंग अपॉन 12/1 at 3 तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप मैसेज एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ वी कम बैक टू आवर NA10, ठीक है। अब अगर हमें सेम चीज यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर यूज करनी है ताकि हम उसमें यूज कर सकें, वी कम बैक टू आवर AI एजेंट। नाउ व्हाट वी सी कि इसको HTML रिस्पॉन्ड कराने की जगह वी कैन से HTML की जगह नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर दे वो, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये मेरा मैसेज आ गया। नाउ अगर मुझे इस मैसेज को व्हाट्सएप पे भेजना है तो आई विल गेट अ ट्विलियो कंपोनेंट देयर। ट्विलियो के अंदर मैं जाऊंगा, ईमेल ये भी आया था, राइट। अब फ्रॉम नंबर जो ये वाला नंबर है, दिस इज फ्री, so I should come back here and the charger, come back here from number में I can copy paste this number, हो गया भाई। हम्म, 2 नंबर के अंदर I can enter my नंबर जो कि मुझे रिसीव करना है, ठीक है। फ्रॉम के अंदर आई कैन एंटर द नंबर, उस पर जाएगा जो कि फ्रीली अवेलेबल नंबर है उसका, आई कैन जस्ट एंटर दैट नंबर, ठीक है। आई विल जस्ट गेट द नंबर जो ये फ्री वाला है एंड देन यूज इट है, सेंड करना है मुझे, इस नंबर से सेंड करना है, ठीक है। मैसेज के अंदर क्या जाएगा कि प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, here are the questions, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे क्या, ये वाला जो पार्ट है उसको ड्रॉप करके ले आएंगे, ठीक है, कि प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, हियर आर द अपकमिंग क्वेश्चंस। इसमें ये वाला नंबर हमारा व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी इसको एग्जीक्यूट करके। Agent is running, workflow is executing. Now let's come back to WhatsApp. See, अभी जो ट्वेलियो वाले नंबर यहाँ पे आ गया, prepare for the upcoming interview, here are the questions, here are the 10 insightful questions you can ask before interviewing, कि ये मेरे क्वेश्चन सारे के सारे आ गए हैं। So this was an example जिससे हम automations build कर सकते हैं and we can work on that. WhatsApp automations हो गया, agents हो गया, LLM things बनाना हो गया, and different different platforms को integrate करना, ठीक है। इसके अंदर यू कैन बेसिकली वर्क ऑन इट एंड बिल्ड ऑटोमेशंस, ठीक है।